फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये वाले पेज हैं तो ये इस तरह के ऐड लगा रहे हैं, ये अपनी अगर ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं तो वो उसमें मोस्टली एक इमेज की ऐड लगा रहे हैं, क्रॉसेस लगा रहे हैं या वीडियो लगा रहे हैं, तो वो इस तरह की लगा रहे हैं। तो आप भी जो करें, बिकॉज दे आर अ ब्रांड, उनके पास एक अच्छी फॉलोइंग है, उनके पास एक अच्छे पेज पे लाइक्स हैं, एक ऑडियंस उनके पास ऑलरेडी बिल्डअप हुई है, और आपके पास ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, एंड यू हैव नो आइडिया एट ऑल कि आपने किस तरह के लोगों को ग्रैब करना है या फिर उन लोगों का टेस्ट क्या है। क्योंकि आप ऑब्वियस बीइंग अ 1 पर्सन या 2 या 3 या फिर आप मल्टीपल फ्रेंड्स भी मिलकर कर रहे होते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेड मतलब क्या कहते हैं सर्कल पे या लिमिटेड माइंडसेट को आप कवर अप कर सकते हैं। तो थोड़ा ब्रॉड करने के लिए आप एड्स बोरिंग होना शुरू होते हैं, तो जितने शॉर्ट एड्स होंगे और जितने शॉर्ट अंदर रहते हुए मतलब शॉर्ट इंटरवल के अंदर रहते हुए जितना आप उसको आई कैची बना लेंगे, उसके फर्स्ट 4 to 5 सेकेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप अपना मैसेज वगैरह शुरू करते हैं जैसे कि वो है क्या, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट विद इमेजेस बिकॉज इमेजेस इजी होते हैं और उसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैसल इतना ज्यादा नहीं होता, और ये अगर यू आर गुड विद वीडियो एडिटिंग, आपके पास वीडियो के आइडियाज इतने अच्छे हैं, फिर अगर आप जैसे क्लोथिंग में करें तो यहाँ से क्लिक करेंगे पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश होने से पहले भी कुछ देखते हैं क्या मैसेज आता है, क्योंकि मैंने इसमें अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह ऐड नहीं की, वो ऐड करूंगी जो भी होगा उसके बाद जो है ये पब्लिश में से कह दूंगी क्लिक टू पब्लिश। उसके बाद फेसबुक का एक सॉर्ट ऑफ चेक होता है, एल्गोरिदम होता है, वो चेक करता है कि आपके ऐड में कोई इस तरह उनका अगेंस्ट द पॉलिसी कोई इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई। अगर कहीं नहीं लगी हुई कोई कंटेंट में, मतलब जैसे समटाइम्स ब्रांडिंग इंफ्रिंजमेंट, क्योंकि फेसबुक पे इस तरह अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी लिस्टिंग की होगी पहले, वो आपको फिर आप एड्स नहीं लगा सकेंगे। पेज आप हैंडल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है वो हैंडल कर पाएंगे, लेकिन आप एड्स ना लगा सकेंगे और ना ही एड्स को जो है वो मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम पे जो आपका अकाउंट बना होगा प्रॉपर, वो क्या एड्स मैनेजर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो जब आपने एड्स लगाने मेक श्योर करना है जो आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स कस्टमाइज भी कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप कुछ शर्ट्स लगा रहे हैं या फिर
मैंने आपको बात की थी एक एड सेट के अंदर जब आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना इंटरेस्ट ऑडियंस का आपने पहले तो सेलेक्ट किया था कि ठीक है इस रीजन के अंदर और ये तो आपने डिफाइन कर लिया ना, ठीक है मैं लाहौर में सिर्फ सेल कर सकता हूँ तो मैं एड की सिर्फ लाहौर के लोगों को शो कराऊंगा। एज मेरी अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है तो वो मैं चलो 18 to 65 प्लस तक जो है वो मैंने शो करवा दी। फिर उसमें इंटरेस्ट में आ गया था कि जो लोग